Good morning, students. Now, this is another video of English language, which is meant both for boys of boys wing as well as for girls of girls wing, because when I take class, it is for all three sections. And the same video I'll be sharing for 10th standard also, because interchange of sentences, today's topic is interchange of sentences, which is also known as transformation. So this topic is included in your syllabus of 9th standard, then you studied it in 10th standard, then it continues in college section also. So today we will discuss transformation of only two types. Now first, what is transformation? Transformation is basically conversion of one sentence into another sentence without altering its meaning. Altering means changing. So when one sentence is converted into its another part, and the meaning remains the same, then we call it interchange or we call it transformation. So today's two types of sentences which we are going to deal is one, that is interchange of to with so, and another is interchange of as soon as with no sooner. Now this interchange is also termed as positive to negative. Okay, so see, I have already mentioned two examples of this first interchange, that is to into so. The first sentence which I have taken is he is too proud to admit his fault. जब उसको आप कन्वर्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एडवर्ब टू को आप रिमूव करेंगे और इसकी प्लेस पे आप लगा देंगे सो. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट चेंज. सेकेंड, यू विल रिमूव दिस वर्ड टू and then you will put a whole phrase that he cannot. So these are the two major changes which you do while converting to into so. Though this conversion you study right from 9th standard, but in spite of that, after you reach 12th standard, then also there are 50% of the students, they are unable to solve it when it comes in your examination. So be very, very particular, because in 10th, in 12th, in your board examination, pre-boards, English language, if transformation is there, one or two sentences will be there. So did you notice? He is too proud to admit his fault. आपने जब इसको कन्वर्ट किया तो आपने एक चेंज टू को हटा के सो कर दिया, दूसरा आपने इस टू को हटा करके दैट ही कैन नॉट कर दिया. सो नाउ द करेक्ट आंसर इज ही इज सो प्राउड दैट ही कैन नॉट एडमिट हिज फॉल्ट. नाउ we have taken another interchange, which is as soon as into no sooner. I have already mentioned the sentence, as soon as I came she left our house. What will be the correct answer? इसको आप रिमूव करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा no sooner. Then you will see the verb. If the verb is in second form, okay, if the verb is in past, second form means if the verb is in past, then you will put did. तो फिर no sooner के आगे आप क्या लगाएंगे? did. In case अगर verb present में है तो फिर ये did नहीं लगेगा, did की जगह does लगेगा. तो ये एक कॉमन चीज है जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है. दिस विल बी एज सुन एज आई केम शी लेफ्ट हर हाउस, नो सूनर डिड आई कम. जब आप सेंटेंस में डिड लगा देते हैं, उसके बाद जो वर्ब होती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है. ये ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इसको हमेशा के लिए आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि अगर सेंटेंस में डिड की प्रेजेंस है तो उस सेंटेंस में जब आप उसके बाद वर्ब यूज करेंगे, इट विल बी ओनली इन फर्स्ट फॉर्म. इफ यू विल मेंशन इट इन सेकेंड फॉर्म, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ बिग ग्रामेटिकल मिस्टेक. सो एज सून एज की जगह आपने नो सूनर डिड लगा दिया, उसके बाद आपने केम को चेंज किया, इस कॉमा को रिमूव करके आप लगाएंगे दैन, एंड दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ओके, will remain the same. The sentence which is after the comma remains the same. You write it as it is. Then she left our house. So the correct answer is as soon as I came, she left our house. और इसको जब आपने कन्वर्ट कर दिया तो आपका आंसर आ गया नो सूनर डिड आई कम देन शी लेफ्ट आवर
house. We will take few more examples. सबसे पहले आप एक बार और to और so का इंटरचेंज देख लीजिए. Sentences: he is too simple-minded to be a successful agent. He is too simple-minded to be a successful agent. इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? He is, इसको आपने रिमूव कर दिया, so simple-minded, ठीक है. फिर आपने इसको रिमूव कर दिया, अब पूरा फ्रेज लगेगा, that he cannot be a successful agent. I hope by this time now you must be very very clear about this interchange of to and so. In case if this auxiliary or helping verb is in past, अगर इसकी जगह यहाँ पे was होता तो फिर आपको एक और चेंज करना पड़ता. ये was को आप as it is कॉपी कर देते और this cannot will become could not. Am I clear? अगर सेंटेंस में प्रेजेंट ऑक्सिलरी है तो आप कैन नॉट का यूज करेंगे. अगर सेंटेंस में पास्ट ऑक्सिलरी है तो फिर आप कुड नॉट का यूज करेंगे. इसी इंटरचेंज में एक वेराइटी या आप कह लीजिए कि एक्सेप्शनल सेंटेंसेस और होते हैं जो आप देख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज. सेंटेंस है ही इज टू ईगर फॉर प्रेज. इसकी आइडेंटिटी ये है कि इसमें TOO वाला टू रहेगा, लेकिन ये वाला टू जो आपने नोटिस किया था वो यहाँ पे नहीं रहेगा. इसको जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आप इस बात को माइंड में रखते हैं कि इसमें बाद का जो पार्ट होता है सेंटेंस का उसमें कोई चेंज नहीं होता. दिस रिमेन्स एज इट इज. तो आपको क्या करते हैं, सिर्फ इस टू को आप हटा करके इसकी जगह पे हो जाएगा ये ही इज ओवर ईगर फॉर praise. Am I clear? So these type of sentences in the category of conversion of to or so, they are called as exceptional sentences and sometimes they come. So you should be familiar with the fact कि जब आप इसको change करते हैं तो there is no major change. You just remove to and you put over and then you get automatically your answer will be correct. We take few more examples of as soon as which will be converted into no sooner did. For example, as soon as we are taking a difficult one, as soon as the beast fell thirsty, comma, he went towards the lake. As soon as the beast fell thirsty, he went towards the lake. Again, when you will remove this, तो ये क्या हो जाएगा? No sooner did. Why did? Because this is second part of the verb. This is past form of the verb. So no sooner did the beast. Beast is another word for animal. No sooner did the beast feel. फेल्ट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ फील. तो जैसे आपने यहाँ केम को कम किया था उसी तरह से यहाँ पे आप फेल्ट को फील करेंगे. ओनली देन योर आंसर विल बी करेक्ट. नो सूनर डिड द बीस्ट फील थर्स्टी. और ये कॉमा रिमूव करते हैं तो क्या हो जाता है? देन. एंड द पार्ट ऑफ द सेंटेंस आफ्टर द कॉमा इज कॉपीड एज इट इज. देन ही वेंट towards the lake. I hope यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा. ये दो मेजर कन्वर्जन है जो आज आपको क्लियर हो जाने चाहिए. अगेन आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल ऑफ एज सुन एज नो सूनर डिड कन्वर्जन. सी, as soon as
principal entered, comma, the students stood up. Okay, so what will be this? No sooner did. Why again did? Because this is again past form. So no sooner did the principal enter. ठीक है, अब अगेन दिस इज पास्ट फॉर्म, इसको आपको प्रेजेंट फॉर्म में करना पड़ेगा. नो सूनर डिड द प्रिंसिपल एंटर देन द स्टूडेंट्स stood up. Am I clear to everyone? So for today it is over. I hope that you must be enjoying studying in this way, because situation is such that you cannot leave your study, we cannot stop teaching, and then there are so many things which can be revised in this manner. So take advantage of this time, enjoy at home, and at the same time try to cover up those things of English language which in class I was unable to focus on, because most of the time we consume our periods and our time in teaching literature. So these things in language, they are very, very important for both 10th boards and 12th boards. So today's video is completed.